सर कैमरा ऑन कर लीजिए वी आर सॉरी फॉर द inconvenience. I guess there was some technical issue, so we are back online. तो मैं फिर से यही कहूँगा कि नमस्कार, जय हिंद और जयतु भारतम। दीपक जी हमारे साथ बने हुए हैं और 2 दशकों से अधिक इनका अनुभव है आईटी में। एंड देन ही हाउ ही चेंज्ड हिज लाइफ with his reading self-help books and growth mindset. We were discussing that, and then some technical issues happened, so sorry about that. And let's continue, sir. रुकावट के लिए खेद है। रुकावट के लिए खेद है। Yeah, तो मैं यही कर रहा था। I was just saying that किसी books give us access to the finest personalities of our time of history, right? The finest men who have done something, achieved something, and they have left a clue as to what has worked for them. So I can choose to live a life without access to that information, and I can try to reinvent the wheel. But I think one lifetime is not enough to accumulate so much of knowledge or experience. And some of the things that you learn from experience, and experience comes typically after mistakes, when you commit mistakes, because Yes. that's the true learning that you carry with you. And life is too short to experience all those things, to make so many mistakes. So one way to fast track our journey, our personal growth, is to lean Learn onto from these others' books. mistakes. Yes, yes, and others' mistakes and others' insights and etc. And this is what we have been doing throughout the history, whether it is religious knowledge or spiritual knowledge or intellectual knowledge, whatever kind of knowledge. The current generation builds on the past generation, and that's why I like that quote as well, that I can see further because I stand on the shoulders of the giants, right? Those who Yeah. have gone before me. So yeah, that has been my philosophy. So I'm kind of a book addict. You can call me a book addict. So I cannot resist. Bibliophile. Yeah, that's the very sophisticated word, but yeah. So because I sometimes, and there's a downside to it as well, which I will probably touch upon later. But I think that some downside is it's okay. It can be handled. Ask me. The positives are too many. Yeah. Yeah. Yeah, I know you are a big reader too, and that's why I see one of the things when you invited me here, I did not think twice about coming online. Although this is my first ever live session, I don't know You if anybody is watching or not, but I was quite nervous about this. no. But the thing is, yeah. You are not very far behind. This is my third. So the thing is, there are very few people in my life with whom I'm able to enjoy a conversation, and that's all because of the limitations in me, not in others. So uh, and you are one of them, so I thought it will be a good opportunity to Uh, discuss, chat online in front of yes. others. As the it's a very very famous dialogue of James Bond. The pleasure is always mine. Likewise. Yeah. So we were talking about your journey, how it started, and then the technical problem occurred. Sorry for that. तो दीपक एक बार आप हम उसी पॉइंट से आगे बढ़ते हुए from 2007-8 you said you started getting into more into the spirituality or growth mindset or 2001. 2001. 2001. Yeah. So looking back, just one reflection I want from you. Had you continued, that 2001 incident would not have happened. How do you envision your life today?
And Very what changed? mediocre. I can't imagine. I mean, I think I would have been a person who was within himself with a very less friend circle, but it's more than friend circle. The kind of person I was at that time, I'll just give you a glimpse into my personality, which I had at that time. It was like if I'm sitting in a group of people and they are talking about something which I don't agree with, at that time I used to keep quiet. Mm-hmm. I will not share my opinion. I will just go by whatever the majority is saying and whatever they choose to do. Sometimes I will participate, I might not participate. That's a different thing. But I did not have a voice. I did not have the gumption or the strength to voice my opinion because I did not value my opinion. I did not value myself. I was like a nobody. Even today, I am not saying that I am somebody, but the thing is, at that time, that inferiority complex was too much, and at times I did not feel that I deserve something better. So that thing that keeps us back, keeps people back, Mm-hmm. because when they feel that they don't deserve certain thing, right? So they won't even go after it. Forget about winning or losing. Mm-hmm. They won't even attempt it. So I was with that mindset. There were a lot of reasons behind it. There is no uh, I have realized that there is no benefit in digging into why something is the way it is, because initially I was into that mode, Mm-hmm. reading into a lot of psychology books, traditional psychology books, and all those things, right? When you try to decipher why I am like this, मैं ऐसा क्यों हूँ? Mm-hmm. And I think that's a very, it throws you in a very negative loop, where you start discovering, and when you realize that okay, it is because of this, because of my parents, because of my Yeah, past, because of my this, that, you go into that blaming mode, and you lose the power, because as mm-hmm. soon as you start blaming your past, your history, your your associations, friends, parents, or whatever, right? You lose power, and you become a victim in your own life, and then you Yes. leave that narration. So I Mm-hmm. think it's and then that's where I shifted from traditional psychology to something called NLP, neuro linguistic programming, which Tony Robbins Yeah. introduced me to it, but Richard Bandler and John Grinder were the founder of this, and I was hooked to it. I was hooked to it. So I still remember, I would like to mention this. I was in Singapore at that time, Mm. working an IT job at that time, 2001, and we went to a shop. My memory is very bad, but sometimes it surprises me because I remember the key things, key moments of my life Collective. without any fail. Yeah. So there used to be a shop called Kinokuniya. It's like Okay. our Not like crosswords and this kind of thing, right? Mustafa and No, 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 big no, shops. no, no. It was purely a bookshop, Mm-hmm. Okay. Kinokuniya, Mm-hmm. and there I was just uh, with my few of my friends. I was just roaming that, and I chanced upon a small audio cassette. It's called the Awaken the Giant Within. It's a Ah, kind of audiobook. shortened version of the book Awaken the Giant Within by Tony Robbins. It came in somewhere 1986 or 90, something like that. The book was written in that, and I took that audio book. It was, still remember, it was 10 Singaporean dollars in 2001. So I bought that audio cassette, and we used to have Walkman at that time. So in Singapore, you could not survive without a mobile phone at that time. When in India it was not so prevalent, so it was quite surprising when I went there for the first time. So mm, and I listened to that audio book, I think every day, Mm-hmm. um, for 2 months on the trot, every day whenever I used to my office journey from my apartment in Singapore was 30 minutes bus ride, and this audio cassette was 30 minutes each side. Okay. So audio cassettes, those audience who have never experienced Seen audio that. cassette, Yeah. yeah, was the audio finishes, the tape finishes on one side, you have to flip it and you have to put it back on the other side so that it starts playing the other side as well. So it was 1 hour 5 minutes or something, and I would listen to one side on the way towards office and the other side on the way back home, and I did that every day for 60 days because I wanted some drastic changes in my life at that time. And and that's where I realized that the power of subconscious mind, right? When you put, Mm-hmm. it's like
in our IT world we say no, garbage in, garbage out. So is our mind, and so is our life. If you put garbage in your mind, if you put garbage in your body, that's what will come out. So as I started putting this information, something started to shift unconsciously within myself, So a lot of changes happened, physical changes, attitude wise. I became more bold or confident. I would speak up. I would surprise myself by speaking in situations where in past I would keep quiet. So those kind of things, and I started noticing them, and others started noticing them, and they commented about it, and that's Hmm. when I realized that okay, this thing works. And then I went into a frenzy, that whatever I devoured whatever was written by Tony Robbins, and then his book has reference to so many books with respect to fitness, physical fitness, spirituality, all those things, and so many. It's a the Awaken the Giant Within is it's a very huge book, right? It's a Hmm. huge book, and I still have that cassette with me. It's in front of me there, so I just keep it as memorabilia, because that thing put me on a path Yeah. that changed my life. I think the direction of my life. So I believe that there are a lot of self-help techniques, materials, etc. But the core of it is this. If I have to put it in a very short sentence, right? Anything is possible in this world. Anything is possible, and if anybody in this world has achieved something or has done something, you have the potential to do the same thing. What you need to do is to study the people who have done it before you, Hmm. follow on the footsteps, not necessarily entirely, I mean, verbatim, but the thing is, the path will be there, of course. Uh, the road is same, the marathon, the uh, the passage, right? It's the path, the entire route is same The for track. everybody, but Yeah. everybody, yeah, track is same, but the journey for each runner is different. So Hmm. your journey will be different, but the route is there. I mean, the path is there, the directions are there. You just It need to depends follow. on one's perspective also, what he perceives, what he sees during the journey. The Yeah, and that's where the belief system come in. The belief Mhm. systems come in, and the belief systems are very important aspect of our life, because Edison said, right? I mean, sorry if I quote too many people, because I No, still no, no. feel that my personal thoughts are still not that worthy as the thoughts of so many great men. So I lean on their thoughts to Uh, illustrate some points. I'll The thing just is, Edison's. interject one Hmm. thing Yes, here. yes, go ahead. Sure. Many of my friends have told me Hmm. that, okay, you read books, you quote this writer, this author, this book, that book, but what have you crystallized out of that? What is your? Is there something which you can say which is yours? I said, I have not yet reached at that stage. Yeah, Um, you mention a very important point, and this is sometimes the defense of people who are, let's say, anti-book, or who don't like leaning on the books, right? That's fine. I mean, the thing is understanding something, crystallizing something from an existing field of thought, right? mhm. Doesn't mean that you have to rehash the thing in your own words. That that is not the essence of whether we have crystallized it or not. A belief, a sentence, a word represents culmination of the entire philosophy sometimes, right? Just Yes. one belief. Yes. The word like confidence or anything, right? It's just one word, but it's not a one word. It's the culmination of the entire experience, entire history and narrative around that word, which represents a concept. It's sometimes a single words represent the entire philosophy, entire concept, right? And for you to explain it to other people or to share it with others, you don't necessarily need to put it in your word, in your own words, but sometimes we need to do it to make it simpler, or to explain it to people who are interested. But this narrative that okay, you quote, so what you have crystallized from it and what is your own, I think they're missing the point. It is just the argumentative stance, because if, let's say, if I quote something, right,
like I was about to say, I was about to quote Edison that Hmm. whether you believe you can do it or not, whether you think you can or you cannot, you are right, because either thing is possible. It depends on your conviction, your belief. Mhm. So, and that is very well said. So I don't need to put it in my own words, but I know the essence. And how I know the essence is when I have lived that essence, right? Yeah. When I have actually experienced it in my life. Otherwise, of course, it will remain a concept to me which I probably don't understand it completely, or I have not felt it completely, right? Intellectually, I might understand it, But but practically, I I have have not not lived experienced it. it. Yeah. Yes, I have not experienced it. I have not lived it. So it's just a, I'm just it's a lip service. But when you say something because you have felt it, you have experienced it, right? Hmm. And then you share it. That's where even the people with whom you are sharing, they will feel it. Huh? I think you can't fake things. Okay, I mean sometimes we write mails or we write messages, right? Yeah. And if we are very furious, it will reflect in the words. The tone will reflect in the words Your unconsciously. your mind automatically select words, choose words Yes, which will yes, reflect the that mindset or that state of yes, yes, yes. you are in. Well, Deepak, coming back to the same thing, same the topic. Uh, it's a question came to my mind. Hmm. What leads to what? It's your mental growth mindset or mental strength which forces you to go for acquire more physical strength, stamina, or move towards physical fitness, or is it other way around? Is it your physical strength, physical fitness which propels you towards having more of a mental strength or growth mindset? It's a very interesting question, and I would say it works both ways. It depends on what is your strength, right? Or what is simpler for you. For a sick person who is physically, let's say, at the moment incapable in some way, or disabled in some way, or challenged in some way, for that person, it might be very tough to take any physical endeavor if that person's mind is not in it, right? Yeah. So for person in such a situation, it behooves him to strengthen his mind to work on the mental aspect, because that will propel him towards that physical wellness. For a person who is, let's say, depressed, very sad, and dejected, demoralized, etc., that person's mind is not in a state where even if you go and advise, that He will not person listen. will not be, yeah, he will not be in a receptive mindset, state of mind. For those people, the easiest thing to work on is physicality, the body, right? So NLP, I mean, it has various techniques, but one of the thing is, if you are feeling depressed, right, Hmm. you just sit upright. Okay, you Shoulders you back. assume a posture. Yeah, you straighten your back, you look straight, you put your Hmm. shoulders back, you breathe in a powerful way, and you see if you feel the same way. You will definitely feel a difference, because see, one of the beauty is of this, I mean, I'm a fan of NLP. We can talk some other day on the NLP entire session, but the thing is, Sure. see, we don't feel our emotions. Sometimes we do our emotions. When I'm Okay. dejected, when I'm depressed, Hmm. I how we know that a person is depressed or he is in a bad mood? Oh His mind is not flashing a message, right? His mind no. is not flashing a message. His Basically, body is there flashing. yeah. He's lethargic. He's not. He's slouched. He Ah. is probably looking down. Yeah. His facial expression is like, there's a very sad क्या or this करना thing. है या ये सब है. चलता अगर उसी है. को एकदम से वो कड़क कर दो. हम्म. आर्मी के जवानों को डिप्रेशन होता है क्या जब शुरू में जाते हैं ट्रेनिंग में? उनका कैरेक्टर पूरा तोड़ के बदल दिया जाता है, राइट? Yeah. वो जो ट्रेनिंग होती है, तो और एक टाइम के बाद में सबका रूटीन डिसिप्लिन सब एक एक लाइन में आ जाते हैं. कैसे पॉसिबल है? सब इतने डिफरेंट पीपल हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, राइट? डिफरेंट Yeah. सोसाइटी के डिफरेंट सोशल स्ट्राटा से आते हैं, लेकिन सबको एक लाइन में ला दिया जाता है. इट्स द पावर ऑफ फिजिकलिटी, बॉडी. सो अगर आप डिप्रेस्ड हैं, या बहुत ही मतलब आप डिजेक्टेड हैं, डीमोटिवेटेड हैं, एक्सेट्रा, और आपको अपने आप को मोटिवेट करना है, सबसे पहले
take control of your body. Get out for a walk. Start with a walk. Move. Do something. Go out. Get out in the sun. And believe me, what I have felt in my life itself is that sometimes in the night, right, because of some reason or something, you'll be very depressed. Sometimes life happens, right? Life throws at you a lot of curveballs, and you get depressed. Sometimes you get worried. Sometimes you get scared. We are all humans, right? There's Jati pi dukkha, jara pi dukkha, vyadi pi dukkha, maranam pi dukkha. Buddha has said, right? Lord Buddha has said that life is suffering, world is suffering. So the suffering will hit you at Hmm. different point of your life. It will hit you, no matter whether you are, Tata, Birla, Ambani, Adani, whoever you are. हाँ, but Suffering, you cannot escape suffering. So the thing is, when it happens, at times you will notice that when it is darkness in the night, right, that is more accentuated. That is more, you know, the intense the feeling. And if you go out in sunlight, you start walking. Sometimes you feel very light. Things become brighter. So what I'm trying to say is that start with physicality if you are in that mindset. If your mind is not in a place where it can listen to anything, just do something with your body. So, and one it works both ways. Just to answer your question, it works both ways. Depends on where the person is. If that one person is not in a yeah, go ahead. one interesting point you made that in the night you feel more depressed. मुझे ध्यान आता है गांव पे जब मैं था तो मेरे पितामह या और भी लोग जो बूढ़ पुरानिया जो लोग होते हैं उनका ये कहना था कि रात को 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। पूछा एक बार क्यों, तो उस समय तो समझ में नहीं आया, बट अब समझ में आता है। उन्होंने कहा कि रात को आसुरी शक्तियां प्रबल हो जाती हैं। अनलेस अंटिल देयर इज रियली समथिंग अर्जेंट, there is no business for you to go out in the night. But here, in cities or in modern life, I would say, not only cities, in modern life, night out is a fashion. Is this again another cause of so many, depression cases and other things? Interesting point. See, it is interesting point. I would not want to demonize the darkness, but there But is a reason our scriptures have said that tamaso ma jyotirgamaya, right? yeah, yeah, It's one is that the materialistic nature of darkness, which hides from us the beauty of what is around us, right? That is one thing. You might put a lot of bulbs, etc., all these things, but the natural beauty, the it won't come out. the glow of sunlight you cannot get from artificial light. Maybe in future we might be able to emulate it, but the thing is, uh, and it is also symbolic. Tamsoma Jyotirgamaya, right? Because this this andhera, this darkness is a representation of many things: the darkness of mind, the darkness of soul, the darkness of human nature, right? The baser instincts, Yeah, because they become more prevalent in night. And you are right. And why all those things? See, why is a loaded question. We don't get too much benefit from why. When you ask why me, or why this happened, etc., you will get answers. Your mind will give you answers to satisfy you, but it will hurt you. It will not give you any solution. So I what and how, that are those are the better questions to ask. So anyway, I digress. And if I digress, sorry, if I digress, please feel free to bring no, me back to the track. we both have digressed, but your question that why me, uh, मुझे पूरी तरह से याद नहीं आ रहा है। शायद अमेरिका के वो टेनिस, बहुत बड़े टेनिस प्लेयर थे शायद, उन्होंने कई उन्होंने जीता था। कौन, McEnroe? नो, नॉट मैकेनरो, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट प्लेयर। Modern player, Andre Agassi, Pete ना, Sampras, एट्टीज एट्टीज older. समटाइम, हाँ एट्टीज नाइन्टीज Okay. समटाइम। वो एक इंसिडेंट मैंने कहीं पढ़ा था Mhm. कि he fell sick and he had blood transfusion, and Okay. somehow that blood was infected with AIDS virus. Oh. So he used to get fan mails. तो उसमें एक बच्ची ने लिखा था कि oh God, why you? And then he had written a very beautiful reply कि अमेरिका में लगभग 4 लाख या 5 लाख बच्चे हैं। उन 5 लाख बच्चों में 5,000 बच्चे जो है सो कि काउंटी लेवल या उसके और ऊपर स्टेट लेवल के टेनिस खेलते हैं।
1000 बच्चे नेशनल लेवल का टेनिस खेलते हैं. When I was one among them, I didn't ask God Ask why this me, question. Yeah, true. why me. So when God, by hook or by crook or by fluke, I don't know how, but when I got this, why should I ask God why me? Right. But again, contrary to that, we both have worked in IT field, and there we are taught that you have to ask why 5 times. If this is happening, why? Yeah, see, there's a difference. There's a difference because Hmm, here, when you are dealing with procedural things, right, hmm, practices and all those things, analytical things, of course, to dig into that, the reason, the core reason, because you need to remediate that by identifying what has gone wrong. That is fine. But when it comes to life, there are so many variables, and we can't presume to know as well. uh, a business analyst might know the business process very well, and he or she might be an expert, but hmm, nobody in this world can claim to be an expert on life. Nobody, right? yeah. Irrespective of the psychology, spirituality, religion, whatever field you take, nobody can claim. If somebody is claiming to be that, please be careful of that person. But such is life. So because of the vast amount of variables that are there, right, and we won't know why something has happened, because this is, it's not out of design. Hmm, But what we are, where this scientific procedures and process come handy is when we are dealing with man-made procedures. If you see, we ask all those 5 questions, etc. Wherever it is man-made things, right? yeah. Man-made process, Mostly man-made things, and all. We don't ask these 5 questions and discover truth the of secret life. of universe. Yeah, we cannot ask an astronaut or physicist or chemist or biologist to ask 5 whys and reach the nirvana of that field. It will never happen. So it It is will for never. human made things. Yeah, it is for human made things. It works well there. We should use this process. These are the distillation of the learnings, which some experts have identified. There's no harm in using that, but we should be quite careful and choosy when we want to adapt them to life. Okay. So Deepak, you talked about your growth mindset journey that it started in 2001. Your physical fitness journey, when it started, and why and how it started. Interesting. Very interesting question. I'll be vulnerable here. You have put me on spot. So, see, the thing is on physical fitness, right? I was a person in my early 20s that if I saw another person of Hmm, my age with a paunch, right, or with a belly. slight pot belly, right, Yeah. I would have extreme disregard for that person. And I'm not very proud to say this, but in those years, like with my, and my thought process was like this. I mean, what kind of a man will allow his body to grow out of shape? I mean, like this. I Hmm, mean, how yeah. how can anybody be so unconscious? So that used to be my mindset. But of course, life is a way of teaching you things, right? So when good things started happening in my life, and I got kind of complacent, and then life happened, job happened, and IT can be very stressful at times, where you don't even have time, where you sometimes you spend 24 hours in office, right, when there Yeah. is crisis, and there is absolutely nothing wrong in that. I mean, we never ask this thing that it's a शोषण हो रहा है, ऐसा कई लोग बोलते हैं ना कई बार कि Hmm, यार ये तो शोषण हो रहा है, इतना हम काम करते हैं सब, अपने जवानों से हम कभी पूछते हैं क्या कि आपका शोषण हो रहा है क्या? रात में चले ah, जाते हो, कभी भी चले जाते हो, हैं छुट्टी से वापस आ जाते हो, तो ये सब बकवास बात है. जब when duty calls, I think it doesn't matter whether it's night or day, 24 hours, 48 hours, doesn't matter. It's our duty, वो करते हैं. तो hmm. there's nothing wrong in that. तो job nature ऐसा होता है, तो करते थे and things like that. So the fitness journey started taking a backseat, Backseat. Okay. and then slowly, and believe me, Lalit, I have videos from, I think, from 2001 to till now. Hmm. Every year, in fact, in 2001, I wanted to enter Bill Phillips Body for Life program. Okay. There is a book called Body for Life.
Hmm. And in those days, I think the prize money for the winner of that competition was $100,000 US dollars in 2001. Wow. Hmm. So the competition was something like you have to for 3 months. For 3 months, you need to enter into two categories: either the one who loses most weight or the one who builds most muscle, right? Hmm. Depending on Okay. whether you are on the leaner side or you are overweight. Hmm. And you have to use one of their protein powders or things like that, and you have to follow the program. The book outlined a program, and you Hmm. have to take before and after photos. So Hmm. from there, my journey of before photos started. I would take these before photos every year, every 2 years, whenever Hmm. that instinct came, right? जब जब वो कीड़ा जागता था, तब तो मैं बिफोर फोटोज, बिफोर वीडियोस, न्यूज़पेपर लेके, बिकॉज बॉडी Hmm. फॉर लाइफ में बोला था कि उस समय तो उतना सब हाँ. टेक्नोलॉजी उतना नहीं थे, तो अब आज का न्यूज़पेपर, क्योंकि दैट प्रूव्स कि Hmm. आपने इसके इस तारीख को आ, लिया है. हाँ, इस तारीख को लिया है, और इसके बाद से नहीं, मतलब वो, या इसके पहले से तो नहीं कर सकते हैं आप, इसी Hmm. से किया होगा, इसके बाद से किया होगा. तो आई हैव सो मेनी वीडियोस ऑफ इट, एंड आई डोंट नो इफ आई पोस्टेड इट ऑन माय चैनल और नॉट. सो वो कीड़ा हमेशा रहता था, Hmm. यार चेंज करना है अपनी बॉडी को, चेंज करना है, चेंज करना है. वो मोटिवेशन नहीं रहता था, सिस्टम टाइम नहीं नहीं बना रहता था. पाते थे. टाइम इज ऑलवेज एन एक्सक्यूज ललित, टाइम सबके पास होता है ना? टाइम Hmm. मेरे पास भी था. Hmm. उस समय वो प्रायोरिटी नहीं थी लाइफ की, या जो भी है कहिए, तो वो हो नहीं पाया. सो रिसेंटली, मतलब कोशिश तो हमेशा लगता करता था, लेकिन फिर ठीक है, फिर प्रायोरिटीज चेंज हो जाती थी, फिर Hmm. वापस आता था, फिर प्रायोरिटी चेंज होती. बट एज यू ग्रो ओल्ड, एज आई ग्रो ओल्ड, थिंग्स आई स्टार्टेड रियलाइजिंग. अब बच्चे हैं, छोटे छोटे फैमिली है, राइट? यू ये मोह माया का चक्कर आ जाता है. Hmm. यार अभी से ये हालत हो गई, अगर हम फिट नहीं रहेंगे, स्ट्रांग नहीं रहेंगे, तो अपने बच्चों के साथ अच्छे से हेल्दी लाइफ कैसे बिता पाएंगे? Hmm. हम उनके ऊपर बर्डन तो नहीं बन जाएंगे, राइट? और क्या हम उनको प्रोटेक्ट कर पाएंगे? तो एज अ फादर दैट थॉट कम्स कि Hmm. क्या हम इतने सक्षम हैं फिजिकली कि अपने बच्चों को, अपने परिवार को हम उनके, लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट प्रोवाइडिंग मनी एंड शेल्टर एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट? इट्स No, आल्सो अबाउट प्रोवाइडिंग एन एक्सपीरियंस एंड it's शेयरिंग द just जर्नी. it's just या, one part of it, one aspect of it. यस, यस, यस. सो वो सब ख्याल आने लगे, फिर रियलाइज हुआ कि इट्स गेटिंग टू लेट, बेटर लेट देन नेवर. Hmm. लेकिन आई थिंक इट्स टाइम. आई कैन नॉट. क्या होता है ना कि जवानी में, व्हेन यू आर यंग, व्हेन आप जवान होते हो, तो आपकी बॉडी बहुत कुछ हैंडल कर सकती है. Yeah. इवन इफ यू डोंट ट्रीट इट वेल, इट ट्रीट्स यू वेल. Hmm. लेकिन उसका भी एक टाइम है. उसने शुरू के लेट्स से 40-50 साल आपका केयर किया, तो एटलीस्ट अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसका केयर करो, राइट? Hmm. यू हैव टू रेसिप्रोकेट. तो दैट थॉट बिकेम प्रिवलेंट, एंड देन आई स्टार्टेड दिस जर्नी. एक्चुअली इट स्टार्टेड इन अ स्ट्रांग वे इन 2023. बॉर्न टू रन करके एक बुक है, वो मैंने 2015 में पढ़ी थी. बॉर्न टू रन, इट्स लाइक इट्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस रनिंग बुक्स. वो पढ़ के आदमी को लगता है कि अब चलो अभी आज ही से भागना चालू कर देंगे. Oh, good. 2-2 दिन दौड़ेंगे, ऐसे दौड़ेंगे, ऐसे दौड़ेंगे, ऐसे. क्रिस मैकडुगल, जॉन मैकडुगल, सॉरी नॉट जॉन मैकडुगल, यार मैं क्या बोल रहा हूँ. बॉर्न टू रन, ओके. Hmm. बॉर्न टू रन वो पढ़ी थी 2014-15 में, और उसके बाद वो तब से मन करता था, लेकिन उस समय भी बाहर दौड़ने का उतना हिम्मत नहीं होती थी, शर्म आती थी कि यार क्या इस उम्र में दौड़ने जाओगे, लोग क्या कहेंगे? दौड़ रहा है, ऐसे कर रहा है. जो भी है, वो अपना सबका एक माइंडसेट होता है. मेरा एक ऐसा माइंडसेट था, तो जो भी है. तो 2023 में मैंने वो जर्नी स्टार्ट की, जनवरी में शुरू किया, दौड़ना चालू किया कि नहीं दौड़ेंगे अब तो यार, अपना वेट लूज करेंगे, जो भी है एक्स्ट्रा एक्सेस फैट लूज करेंगे, स्ट्रेंथ बनाएंगे, एंड्योरेंस, कार्डियो, ये सब इम्प्रूव करेंगे. और इंजर्ड हो गया था, क्योंकि Hmm. वो सिर्फ पैशन से दौड़ रहा था, दिल था उसमें, दिमाग ज्यादा यूज नहीं किया था. फिर उसके बाद में 2-3 महीने रिकवरी में लगे, फिजियोथेरेपी वगैरह करके, फिर अगस्त सितंबर में फिर से मैंने स्टार्ट किया. और उसके पीछे भी एक बुक का हाथ है. उसका Hmm. नाम है फिट एट एनी एज, Okay. बाय पीवी अय्यर. Hmm. मार्शल रहे हैं, उनका एग्जैक्ट ये याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो मार्शल रहे इंडियन, उसमें उनका नरेंद्र मोदी के साथ में और प्रेसिडेंट के साथ में कई सारे उनके Okay. अवार्ड्स उन्होंने जीते हुए हैं. तो उनका बुक मैंने पढ़ा है, फिट एट एनी एज. और उनमें अमिताभ बच्चन का इंट्रोडक्शन था, तो अमेजन में ब्राउज करते वक्त तो बुक का आया था. नॉर्मली मैं फॉर सम रीजन इंडियन ऑथर्स को उतना ज्यादा नहीं पढ़ता था, क्योंकि कुछ फील्ड्स में, मेरे रिलेटेड फील्ड्स में उतने ज्यादा ऑथर थे नहीं. शिव Hmm. खेरा थे बहुत पहले, यू कैन विन करके उनकी बहुत पुरानी किताब है.
बहुत ज्यादा ऑथर थे नहीं, तो वेस्टर्न ऑथर्स को ही पढ़ता था। तो वो जब बुक मैंने पढ़ी ना, तो और उनकी जब लाइफ देखी, उन्होंने जो अचीव किया है, और जो बोलते हैं, वो बोलते हैं कि भाई अगर तुम एक डेढ़ घंटे से कम दौड़ रहे हो तो उसको वर्कआउट में काउंट ही नहीं करो। हम्म और ही इज लाइक 70-80 years old and he runs every day 1.5 hours and things like that and all. काफी इंस्पायरिंग बुक लगी। तो मुझे लगा यार, ये इतना अकॉम्प्लिश्ड व्यक्ति इस उम्र में इतना कर रहा है, और तुम ये भी नहीं कर पा रहे हो। आई विल स्पेयर द एक्सप्लेटिव्स। सो आई मीन दैट जॉल्टेड मी। तो उसके हम्म बाद फिर मैंने शुरू किया, लेकिन मैंने रियलाइज किया कि जुनून में नहीं कुछ करना है, थोड़ा सा सोच के समझ के, बिकॉज आई एम अ पर्सन हु गोज ऑल इन। अगर मुझे कुछ ठान लिए तो मैं फिर एकदम से घुस जाता हूँ उसमें, एंड समटाइम्स दैट बैकफायर्स। तो फिर मैंने काउच टू 5K प्रोग्राम स्टार्ट किया, एंड हम्म मैंने अपना गोल बनाया कि मेरे बर्थडे के दिन मैं एटलीस्ट 5 किलोमीटर कंटिन्यूसली दौड़ पाऊँ। और मेरी कंडीशन उस समय ऐसी थी कि 5 मिनट भी मैं कंटिन्यूसली दौड़ नहीं सकता था। आई यूज्ड टू सांस फूलने लगती थी, आई यूज्ड टू गो आउट ऑफ ब्रेथ, एंड आई यूज्ड टू हफ एंड पफ एंड थिंग्स लाइक दैट। So it started with that. Then I used to run on and off, on and off, on and off. But since this beginning of this year, I think it was also a different story. But since the beginning of this year, I think I have been running consistently, and now I run almost 10 kilometer every day. So I'm on a good journey. Still long way to go, but I think it. I mean, this has been a very good thing in my life recently, because I think everybody, every audience who is whoever is listening, right? हम्म Physical fitness and health is very important, and we tend to Ignore. overlook it. We Yeah. ignore that to a large part of our life, and only when some tragedy happens, we remember कि नहीं यार, इसका ख्याल रखना है, right? एक 10 लाख की गाड़ी का हम जितना केयर करते हैं ना, हाँ, इस उसका प्राइसलेस बॉडी का उतना केयर नहीं करते हैं। उसका आधा भी केयर करे बॉडी का तो तो मतलब कहाँ पहुंच जाएंगे? ऑफ कोर्स हमारी बॉडी हमें हमारी कार हर एक साल में 6 महीने में सर्विस पे जाती है ना, हाँ। चकाचक सफाई होती है, सारा ट्यूनिंग होती है। और हम्म हमारी बॉडी है जिसको कि हम अब्यूज करते जाते हैं, जब तक वो ब्रेक डाउन नहीं होती है हम उसकी सर्विस नहीं कराते हैं, हम उसके बारे में सोचते भी नहीं है। तो या इट इज समथिंग दैट ऑल ऑफ अस नीड टू थिंक अबाउट, बिकॉज ये लाइफ का सिर्फ एक ही जरिया है इसको हम्म जीने का, और इसको इसका अनुभव करने का, राइट? टू एक्सपीरियंस इट एंड टू लिव इट, एंड इट्स योर बॉडी। आपकी बॉडी नहीं है तो आप, ये लाइफ नहीं है, राइट? सो Yeah, इट I इट mean, इज everything अल्टीमेटली is there. एसेंशियल। यस। You can't enjoy life. Yeah, nothing, anything, whether you are spiritual, you are intellectual, whatever you are, right? हम्म इवन इसीलिए तो योगा का ओरिजिन कहाँ से हुआ था? जब हमारे ऋषि मुनियों को, उनको जब वो मेडिटेशन करने के लिए 4-4 घंटे, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे एक ही सॉलिड पोस्चर में विद इरेक्ट स्पाइन बैठना होता था, तो ये सबके बस की बात नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले उनको अपने शरीर को सुदृढ़ करना पड़ता था, और योगा का स्टार्ट, योगासन का स्टार्ट वही हुआ है। योगा इज नॉट ओनली योगासन, वो तो हम्म अष्टांग योग है अष्टांग पतंजलि योग के है वो हिसाब तो। से, या। तो हम्म, बट इट इज स्टिल फिजिकल पार्ट इज वेरी, आई मीन, यम नियम प्रत्याहार प्राणायाम आसन, प- राइट? यम आसन प्राणायाम, आसन के बाद में प्राणायाम आता है, हाँ, राइट? यम नियम तो आसन प्राणायाम प्राणायाम, प्रत्याहार और भी हैं तो 8। ध्यान धारणा समाधि आता है। हम्म ध्यान धारणा समाधि लात में आता है, समाधि 8वां हुआ है। बट द पॉइंट इज दिस कि मतलब स्पिरिचुअलिटी उनको शारीरिक उससे कुछ लेना देना नहीं है, उनको कुछ अकम्प्लिश नहीं करना है, मतलब शरीर के जरिए उनको पूरा वो स्पिरिचुअल करना है, लेकिन उसके लिए भी आपका शरीर सहयोगी है, और उसका केयर करना है। तो जब, तो हर कोई भी फील्ड ले लीजिए, बिना हेल्दी बॉडी के आप कुछ नहीं अचीव कर पाएंगे। Deepak, coming back to growth mindset, हम्म। uh, what are the steps apart from reading self-help books and the books related to growth mindset? See, books are just a medium to gather information, right? But the you can gather it from books, you can listen to videos, right? Audios, podcast, listen to a wise friend. It's just the information, right? Yeah. So why we say books is because somewhere it needs to come from. So growth mindset, देखो, if I have to explain it very simply, it's this: the difference between growth mindset and fixed mindset. But I'll let me mention this, the book name also, Carol Dweck's the book Mindset. Mm. So it's a very famous book on this one. It goes into a lot of details, etc. But
what I have understood and why I'm so fond of this concept is that, see, growth mindset and fixed mindset, there's only this difference, that एक फिक्स माइंडसेट वाला बंदा ये सोचता है कि मैं हूँ, ऐसा हूँ, मैं यही हूँ, राइट, दिस इज हु आई एम, मैं ऐसा ही पैदा हुआ, जो भी नियति है, ये नियतिवादी विचारधारा है, फिक्स माइंडसेट, कि हम ऐसे ही हैं, हम यहाँ पैदा हुए, ऐसे सोसाइटी में, ऐसे फैमिली में, ऐसे कंट्री में, यही है मेरा बैकग्राउंड रहा है और मैं इतना ही कर पाऊंगा, यही मेरी मतलब लिमिटेशन है, मैं तो यही हूँ, है ना, आई एम ए डिम विट, और आई एम नॉट गुड इन मैथ्स, आई एम नॉट गुड इन मैथ्स, ये फिक्स माइंडसेट वाली विचारधारा है। ग्रोथ माइंडसेट वाली विचारधारा है कि आई एम आई हैव नॉट लर्न मैथ्स वेल इनफ एट द मोमेंट, फॉर एग्जांपल, बट आई कैन प्रैक्टिस अ लॉट, आई कैन रीड अ लॉट एंड आई कैन इंप्रूव माई सेल्फ। तो बस वही डिफरेंस है, कोर डिफरेंस बस यही है कि मैं फिक्स्ड माइंडसेट सोचता है कि मैं तो यही हूँ, मेरा लिमिटेशन ही मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेरा ट्रेट्स है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि मेरा लिमिटेशंस मेरी बनाई हुई चीज है, ये मेरे एक्शंस का नतीजा है, मैं अपने एक्शंस चेंज करूंगा तो मेरे रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे, इसलिए मैं कंट्रोल में हूँ। फिक्स्ड माइंडसेट बोलता है कि मेरा एनवायरनमेंट कंट्रोल में है, मैं ऐसा बन गया हूँ, पुअर मी, राइट। ग्रोथ माइंडसेट बोलता है कि नहीं, मैं अपने कंट्रोल में हूँ, मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ क्योंकि मैंने कुछ एक्शंस लिए हैं, नॉट नेसेसरली कॉन्शियसली लिए हैं, अनकॉन्शियसली लिए हो सकते हैं, इट डजंट मैटर, लेकिन जब मैं रियलाइज करूंगा कि ये मेरे कंट्रोल में है, मैं अभी भी अपने बिहेवियर को चेंज करके मैं अपनी लाइफ चेंज कर सकता हूँ, ये जब बिलीफ आ जाएगी तो यही ग्रोथ माइंडसेट है, दैट्स ऑल, एंड आई थिंक दैट इज द कोर ऑफ चेंज, वी नीड दैट माइंडसेट। इंटरेस्टिंग, क्योंकि almost 30 years back, 96 I guess, yeah, 95 96, दिल्ली पुस्तक मेला में घूम रहा था प्रगति मैदान में, और मुझे ग्राफोलॉजी की कोई बुक दिखी। ओके, दैट गॉट मी इंटरेस्टेड इन ग्राफोलॉजी। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी कि मैंने छोड़ा उसको फिर बाद में। अ, उसमें एक जगह था कि यू कैन चेंज योर पर्सनालिटी बाय चेंजिंग योर हैंड राइटिंग। yes, yes, well, I encountered this field of thought in 2001 as well. Yeah, go ahead, sorry to cut No, you. Yeah, go as you said that you start changing your thoughts, and then your personality, your limitations, your traits that will start disappearing over the years. It's not 1 day or 2 day affair. yeah, yeah, it's not instantaneous, nothing Yeah, happens like that. Yeah, and in today's time, where most of us are of 2 minutes generation, 2 minutes Maggie generation, instant gratification. gratification. Yeah, Yeah, that is the motto of this world. It has become okay, and everybody is out there for that. It has become like a rat race. So in that, I was saying before that, my question was that, you know, what are the traits we should look for to incorporate for growth mindset? If someone is not into reading books, says 200, 250, 300 pages book or 500 pages book, who has got time यार? बता दो मुझे, मुझे क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात बोलता हूँ, जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं, राइट, हम्म वो दो दो फील्ड ऑफ, मेरे हिसाब से, आई मीन आई एम जस्ट थिंकिंग अलाउड हियर, ठीक है, हम्म हम्म वो दो दो सर्कमस्टेंसेस से आते हैं, दो सिचुएशन से आते हैं। एक, उन लोग होंगे जो डेस्परेशन में होंगे, जिनके पास टाइम नहीं है, इन द सेंस दे वांट टू चेंज समथिंग इन देयर लाइफ वेरी क्विकली हम्म एंड वेरी पैशनेटली, वो एकदम से, मतलब उनका कमिटमेंट का क्वेश्चन ही नहीं है, हम्म दे वांट हाँ टू डू इट, दे जस्ट नो हाउ, दे वांट टू नो हाउ, ठीक है। हम्म ठीक है, कोई बात नहीं, आपको किताब पढ़ने का वो नहीं है, आप चले जाओ ना, इंस्टाग्राम पे चले जाओ, यूट्यूब पे चले जाओ, कुछ भी वो टॉपिक पे डालो, आपको 2-2 5-5 मिनट की वीडियो मिल जाएंगे, राइट। हम्म सो देखिए, आपको इन्फॉर्मेशन तो चाहिए होगी, आप कुछ भी चेंज करना चाहते हैं लाइफ में, यू नीड टू नो हाउ, वो हाउ आप किताब से नहीं पढ़ना चाहते हैं, हम्म राइट, ठीक है, आपके पास उतना टाइम नहीं है, लेकिन आज की दुनिया में वही इन्फॉर्मेशन आपको, उसका निचोड़, उसका ये
There's a app also, I think, Blinkist, 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 which gives a 10-minute summary of the books, various books. 10 मिनट तो निकालना पड़ेगा ना। सही, आप अगर किसी भी चीज के लिए आप अगर टाइम नहीं देंगे तो आप नहीं अचीव कर पाएंगे, वो तो गिवन है। यू विल हैव टू गिव सम टाइम, मे बी नॉट एंटायर दिस थिंग, बट मैं यहाँ पे एक कैवियट है, एक चीज बोलना चाहता हूँ। लेट मी कंप्लीट दैट ट्रेन ऑफ थॉट। सो दो जने आते हैं, एक जो जिनको मालूम वही मुझे तो करना ही है, मेरी शादी होने वाली है लेट्स से 3 महीने में, मुझे वेट कम करना है। इट्स लाइक दैट पर्सन इज फुली कमिटेड, उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ नॉलेज की जरूरत है। वो 2 मिनट वाले, 5 मिनट वाले इंफॉर्मेशन से किसी दोस्त ने भी उसको गाइड कर दिया 5 मिनट की, भाई तू ये कर, ये मेरे लिए काम कर चुका है, तू कर। राइट, हम जिंदगी में यही तो सीखते हैं। पूरे स्कूल में हम क्या सीखते हैं? किताबें पढ़ पढ़ के ही तो आते हैं ना। हाँ, तो उसके बाद में हम चाहते हैं कि बाकी हमने स्कूल में पढ़ लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, अब उसके बाद हम जिंदगी भर किताब नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम तरक्की करते जाएंगे। तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि यू नो वी लिव इन द इंफॉर्मेशन एज। हर साल 2 साल 5 साल में हमारी ह्यूमन हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन जो नॉलेज जो है डबल हो रही है। राइट, द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज डबलिंग। सो यू कांट बिलीव की, ट्रूली यू कांट बिलीव कि भाई हमने 12 साल 18 साल पढ़ लिया और उसके बाद पूरी जिंदगी अगले 10 20 30 साल हम बिना पढ़े ही हम गुजार लेंगे। सो दैट्स अ delusional thinking. I think we need to understand that कि things are changing in the world so fast and we need to uh, keep with it, with the times, right? Keep pace With the with it. times. Yeah. So and the second category of people are coming from let's say lazy perspective, right? वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं लेकिन फल चाहिए उनको। राइट, तो कि यार मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे ये सब नहीं, मुझे बता दे क्या करना है। उनको आप बता दोगे, करेंगे नहीं, वो करेंगे नहीं, क्योंकि जो अपनी मेहनत से ढूंढता नहीं है ना, खोदता नहीं है, उसको उसका वैल्यू पता नहीं होता है। ये कहानी है ना, क्या सुनार और लोहार की कोई है ना, कि मतलब वो ज्वेलरी या कुछ डायमंड रहता है, वो लेके जाता है और एक लोहार के पास में, और उसको उसका पता नहीं है, उसको उसका वैल्यू नहीं पता है। वैल्यू नहीं पता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप जिस चीज के लिए आप स्टडी नहीं करोगे उसका, या मंथन नहीं करोगे, तो उस चीज का वैल्यू आपको पता ही नहीं होगा किसी चीज का। तो जिस चीज को आप वैल्यू नहीं करोगे, उसको आप अडॉप्ट नहीं करोगे, उसको आप प्रैक्टिस भी नहीं करने वाले हो लाइफ में। तो जो इस कैटेगरी से आ रहा है उसको इट डजंट मैटर आप 200 पेज की बुक दो या 2 पन्ने की दो या 2 लाइन का विजडम दो, उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। चेंज हैपेंस फ्रॉम इनसाइड। स्टीफन कवी का बहुत फेमस कोट है, मैं बहुत बार यूज करता हूँ। The door of change opens from inside. You can only knock. आप कितना ही पीटो, जब बंदा अंदर से, बोलते हैं ना हिंदी में भी कहावत है ना कि आप सोते हुए व्यक्ति को जगा सकते हो, जो जागना ही नहीं चाहता है आप उसको कितना ही जगाने की कोशिश करो, जागेगा नहीं, क्योंकि वो सो ही नहीं रहा है। राइट, सो अगर किसी को बिना किताब पढ़े, बिना इंफॉर्मेशन लिए, मतलब बिना किताब तो एक टेक्निकलिटी हो गई, इससे एक माध्यम है, किताब एक माध्यम है। आज की दुनिया में माध्यम बहुत सारे हैं, पॉडकास्ट हैं, ऑडियो है। देखिए आपके पास 3 ही सोर्स है ना इंफॉर्मेशन लेने के। देखते हैं जो आप, सुनते और जो हैं, सुनते हैं, और जो एक्सपीरियंस करते हैं। तो आपको देखना नहीं है, मतलब किताबों से नहीं पढ़ना है, वीडियो से नहीं देखना है, तो आप ऑडियो बुक सुनिए, या जो भी है वो भी नहीं करना है, तो आप इस पीछे कहिए कि आप फिर ट्रायल एंड एरर कीजिए, आपको जो सही लगता है वो कीजिए। जिंदगी थप्पड़ मार के आपको गिराएगी, आप उठिए, चलिए, कोई बात नहीं, लेकिन आई थिंक दैट विल बी वेरी स्लो जर्नी। It can be a very gritty thing to do. Maybe it might sound very very poetic and all, but I think that is not the right way, क्योंकि आपके पास जब इंफॉर्मेशन है, आप जब जानते हो कि कुछ तरीके हैं जो वर्क कर चुके हैं, आपको नहीं पता कौन सा तरीका आपको सूट करेगा, ये मैं मान सकता हूँ। आप हेल्थ को लीजिए, फिजिकल फिटनेस को लीजिए, साइकोलॉजी को लीजिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए, किसी भी चीज फील्ड को लीजिए, आज डाइट को लीजिए, कोई बोलता है कीटो, कोई बोलता है वीगन, कोई बोलता है दिस दैट, हाई कार्ब लो फैट, कोई बोलता है लो कार्ब हाई फैट, एक्सेट्रा। ऑल दिस पीपल कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। आजकल इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, लेकिन आदमी वी आर ड्राउनिंग इन द सी ऑफ इंफॉर्मेशन, बट वी आर थर्स्टी फॉर दिस। यूजफुल इंफॉर्मेशन आदमी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता है, और उसको तो उसमें सिंपल सा मेरा अपना क्या अप्रोच है, जो मुझे लगता है इंटेलेक्चुअली, मेरे नॉलेज के साथ जो मुझे लगता है कि सही है, यार इसमें कुछ बात है ना, उसको आप अडॉप्ट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, वो आपको वर्क करता है कीजिए। नहीं तो अगर आप किसी एक चीज को पकड़ेंगे नहीं, उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप सिर्फ ढूंढते रहेंगे ना, तो आप कभी कंक्लूजन पे पहुंच ही नहीं पाएंगे।
क्योंकि हर फील्ड में कॉन्ट्रडिक्शन है, इवन डॉक्टर्स कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर। मेरे पास खुद ही मेरे सामने है 8 किताबें हैं, सब एमडी मेडिकल डॉक्टर्स की लिखी हुई है, वेस्टर्न किताबें। कोई बोलता है कि कार्ब नहीं खाइए, कोई बोलता है नहीं सिर्फ कार्ब खाइए, फैट नहीं खाइए, और दोनों के पास केस स्टडीज हैं, रिसर्च है, प्रूफ है, राइट। तो दोनों राइट है अपनी जगह पे, आप या तो ये फॉलो कीजिए या वो फॉलो कीजिए। देखिए भगवान को पाने का भी रास्ते अनेक हैं, राइट। एक रास्ता, कोई एक रास्ता चुन लीजिए, आप मंजिल पे पहुंच जाओगे, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक रास्ता पकड़िए आप, जो आपको सूट करता है, आपकी प्रवृत्ति के हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है, वो एक रास्ता पकड़िए, वो एक किताब पकड़िए, वो एक ऑथर पकड़िए, वो एक यूट्यूब चैनल पकड़िए, कुछ भी पकड़िए, आप उसको एक बार प्रैक्टिस करके देखिए ये अच्छा ठीक है काम कर रहा है क्या, और फिर your practice will lead you to the right things, right practices, right books, right information, right people, and that's how the journey progresses. There is no single formula for success, but there is a generic formula for success. Decide what you Yes. want to do, take massive action, see what is working, what is not working, adapt, repeat. Simple है, easy नहीं है। आपकी इस लास्ट बात से मुझे दो बातें ध्यान में आई कि हम लोग जब स्टैट्स पढ़ते थे, उसमें कहा था, कहीं लिखा भी है, बहुत लोगों ने कहा भी है कि स्टेटिस्टिक्स इज लाइक अ बिकिनी। तो वो जो केस स्टडीज हैं, सो बेसिकली व्हाट कोरिलेशन यू वांट टू फाइंड वो और कर्व व्हाट फिटेड हाइपोथेसिस। होते हैं ललित, हाँ, या वी हैव सीन इन द हाइंडसाइट की जो है ना, कई स्टडीज, फेमस स्टडीज जिसपे यूएस का फूड पिरामिड बना था ओरिजिनल, राइट, हाँ, या, एंड दैट वाज कर्व फिटेड। उसमें से कई हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इग्नोर कर दिए गए थे, क्योंकि और आप देखिए प्रॉब्लम ये होता है ना कि यही होता है, ये आपका जो ऑब्जर्वर्स इफेक्ट है साइंस का यहाँ पे आता है। हम्म, अगर मैं कोई स्टडी ले रहा हूँ, उसमें से एक स्टैटिस्टिक्स निकालना चाहता हूँ ना, तो मैं एक सेलेक्टिव हो जाऊंगा, मैं कर्व फिट करूंगा अपने डेटा को, और सिलेक्शन अपना बायस तो निष्कर्ष रहेगा जो ना। है या वो रहेगा हमेशा। हम्म, तो देर इज नो एब्सोल्यूट ट्रूथ एक्सेप्ट सुप्रीम रियलिटी, बाकी सब तो, बट द एंड ब्यूटी इज कि आप किसी भी रास्ते पे चले जाओ, आपको पहुंचा हाँ, देती। हाँ, एंड द अदर थिंग यू सेड कि एक रास्ता पकड़ लो चलो। तो हरिवंश राय बच्चन ने भी तीसरी या चौथी रुबाई है उसकी, हम्म। मधुशाला की, कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। यस यस, वेरी वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। इसीलिए मुझे कट्टरपंथियों से थोड़ा सा वो रहता है। Yes, we will सॉरी discuss. फॉर दैट। No, no, या no. या We will discuss that also. अभी तो ये इस यात्रा की का आरंभ है ये. या One last question. From here to where? Now, since you have started running 10K, are you planning for marathon or Yeah, yeah. So I some? have signed up for half a marathon Mhm. in September, Bangalore marathon. I wanted to sign up for marathon, but then I realized कि यार तुम ऐसे ही करके फंसे थे 23 में। वो जोश आ जाता है ना, तो आदमी को लगता है हम तो सब कर लेंगे, है ना। आई नो लिमिटेशन आदमी को अपने ऊपर नहीं डालनी चाहिए, लेकिन आदमी को डेल्यूशनल भी नहीं होना चाहिए। I probably can run a marathon, but maybe not in next 3 months. So I have signed up for half a marathon. But ये जर्नी किसी मंजिल को पाने के लिए नहीं है। Mhm. The thing is there is something, there are two things. एक मेंटल एस्पेक्ट और एक फिजिकल एस्पेक्ट के लिए आपके पास एक हॉबी टाइप से चाहिए कुछ, राइट। क्योंकि आप अगर किसी चीज को एक परस्यूट, एक गोल जैसा टारगेट करेंगे ना, अगर मैं मान लो अपने लिए सिर्फ मैराथन टारगेट करता हूँ, Mhm. एक बार मैराथन फिनिश हो जाएगा तो फिर मेरे सामने कुछ दूसरा लक्ष्य, मे बी अल्ट्रा मैराथन सोचूंगा और वट एवर, लाइक, लेकिन उसका एक लिमिट, एक वो बढ़ता जाएगा, वो एक ऑब्सेशन हो जाएगा, वो एक अलग चीज होती है। लेकिन मैं इसको एक हॉबी की तरह से देख रहा हूँ। आप कुछ ऐसी हॉबीज पकड़िए, मेरी फिलोसॉफी के हिसाब से एट द मोमेंट, फिलोसॉफीज चेंज, पीपल चेंज, आई डोंट नो, Yeah. आई माइट इन फ्यूचर, बट द थिंग इज इन करंट स्टेट मेरा यही बिलीफ है कि ऐसी कुछ हॉबी जो कि जो आप लाइक करें और जिससे आप कुछ डिराइव करते हो। तो रनिंग मेरे लिए अभी से, आई एम ए वेरी नोविस रनर, मैं सबसे स्लो दौड़ता हूँ, मेरा रनिंग में कोई वो नहीं है कुछ
अचीवमेंट्स नहीं है, कुछ उपलब्धि नहीं है, राइट। बट व्हाट आई नोटिस इज कि जब मैं सुबह उठ के बाहर निकलता हूँ, राइट, चाहे मैं भले ही 4 घंटे सोया हूँ, 5 घंटे सोया हूँ, मूड खराब है या बॉडी थोड़ा बहुत निगल है, कुछ अच्छा नहीं फील कर रहा हूँ, मैंने ये नोटिस किया कि जब मैं बाहर निकलता हूँ और जाता हूँ और जब मैं दौड़ने लगता हूँ, माई एंटायर थिंग चेंजेस, मेरा मूड फ्रेश हो जाता है, दिमाग में पता नहीं क्या अच्छे अच्छे विचार आने लगते हैं, जो भी है, एंड आई फील वेरी रिफ्रेश्ड, एंड इट हैज फिजिकल बेनिफिट एज वेल, आई फील स्ट्रॉन्गर, आई फील प्राउड कि यार अपने आप को, मतलब आप चल रहे हो जिंदगी में, कुछ कर रहे हो। So that's your dopamine. ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, एंड हुबरमैन, राइट, द डोपामाइन फास्ट, इन लोग बोलते हैं डोपामिन, डोपामिन, या ऑफ कोर्स, बट वो ये बोलते हैं कि आर्टिफिशियल डोपामिन जो आप वीडियोस देख के ये सब देख देख के करते हो, तो दिस इज अ वेरी गुड डोपामाइन, To have. या, टू हैव। Well, thanks, Deepak, for such a great insight in your journey of growth mindset and physical fitness. Uh, आगे जैसा कि आपने कहा, एनएलपी एक टॉपिक मिला, तो अगली बार जब आपको समय मिलेगा तो अवश्य हम उस पर बात करना चाहेंगे, क्योंकि टॉमी रॉबिन्सन की एक बुक मैंने पढ़ी है। आई इट वाज इन 2003 2004, आई गेस, बट उसके बाद मैं उसको ज़्यादा फॉलो नहीं किया, ज़्यादा परस्यू नहीं किया। सो आई हैव टू रिफ्रेश दोज पॉइंट्स एज वेल अगली बार जब भी मिलेंगे, और शीघ्र ही मिलेंगे मुझे लगता है। और फ्रेंड्स जो भी हैं, I guess it is customary for us to say that please like, subscribe and support us, or whatever जो क्लिशे है। बट यस, what all videos मैंने आपका देखा है, they are really beautifully made, very good made, और काफ़ी अच्छा लगता है। तो दीपक का चैनल है द फॉरवर्ड टॉक्स, और ही कीप्स रनिंग एंड मेकिंग वीडियोस, और अपने एक्सरसाइज का भी। So certainly that would inspire us towards the journey of physical fitness and growth mindset. Thanks a lot. Thank you very much, Lalit. Just I want to say that see, I have started a very small journey. You are very kind in your words when you use those praising words and all. So No, I'm very thankful for that. But the thing is, the idea behind this talk is if anybody can take anything right out of yes, it, it would be very. I go with this philosophy. Even when I was starting to make videos, I know that there are so many giants in this field, right? So many successful people, so many successful channels. आप क्या कर लोगे? तो फिर वही बात है कि अगर मुझसे मेरे इन्फॉर्मेशन की वजह से अगर एक भी बंदे में हाँ, कोई कुछ चेंज आए। जागता है, एक भी बंदा कोई उससे ले पाता है, तो दैट विल बी जॉब वेल डन। और Yes. सेकंड थिंग इज इट्स आल्सो एन आउटलेट फॉर मी। Yeah. अंदर बहुत कौतूहल रहता है कुछ शेयर करने का, और इंटरनेट इज सच ए मीडियम कि मैं शेयर Yes. नहीं कर पाता हूँ, हमको लाइक माइंडेड पीपल नहीं मिलते हैं इस टॉपिक के, तो वहीं पे गए, बोल दिए, और अपना एक कम्युनिटी, वर्चुअल कम्युनिटी बन गई। सो however small the tribe is important. So yes, and thanks to you, Lalit, and I think you this new initiative of bringing your network circle, interesting people on your channel, I think it will augur well for your channel. I hope so, and I wish for that, I pray for that. So I wish you continued success on this journey, and may your channel grow a lot, and then I wish the audience, whoever is watching this, to please subscribe his channel and support him in this journey. And thank you very much for having me. It was a pleasure talking to you as always. And I digressed a little, and it somehow feels unfinished, Yeah. incomplete. But such is the topic that it can Yeah. never be completed. Thank you very much. Thanks a lot, and मिलते हैं फिर Sure. दोबारा। Thank you. ओके सर, Namaskar. बाय, नमस्कार, बाय।